राधे राधे। सो टुडे हम क्या करेंगे। आज हम लिसनिंग 15th जो है कैम्ब्रिज बुक 15 उसमें लिसनिंग टू का पार्ट 1 करेंगे। ठीक है। बेसिकली मैंने आपको पहले ही बोला था हम पार्ट में करेंगे जिससे हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। अब एक पार्ट को सॉल्व करेंगे तो उस पार्ट की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें पार्ट 1 में हम देख रहे हैं। इसमें बोला क्वेश्चन 1 to 4 वन वर्ड ओनली। ये आपको पॉइंट समझना है कि 17th डेट को एक कॉन्सर्ट हुआ, परफॉर्मेंस कनाडा से आए। 18th को एक बैले शो हुआ, कंपनी का नाम ये था। 19th और 20th को ये हुआ, 20th इवनिंग में ये हुआ। ये ऐसे बोलेगा, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। और मैं भी इस वीडियो को इन ऑडियो को पहले फर्स्ट टाइम सुनूंगी अब दोबारा। मतलब कि पहले जब प्रैक्टिस के टाइम पे सुनी थी, अब एक बार अब सुन रही हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल पोलाइटली ध्यान से सुनो। पहले क्वेश्चंस पढ़ो आराम से, पॉइंट्स देखो कि कहाँ-कहाँ पे ये मार्क करना, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, कितने वर्ड्स में लिखना है। तो ऊपर मेंशन किया है वन वर्ड ओनली, तो आपको सिर्फ ऐसे चलना है। ठीक है, अपने नोटबुक और पेन ले लीजिए और स्टार्ट। ठीक है, मैं सॉरी अपनी नोटबुक पेन निकाल लो। एक मिनट, मैं भी निकाल लेती हूँ, एक मिनट। ओके, सॉरी फॉर द डिले। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। मैं प्ले कर रही हूँ। To ask about a festival. Part 1. You will hear a woman calling a tourist information office to ask about a festival. First, you have some time to look at questions 1 to 4. Now listen carefully and answer questions 1 to 4. Good morning. You're through to the Tourist Information Office. Tim speaking. How can I help you? Oh, hello. Could you give me some information about next month's festival, please? My family and I will be staying in the town that week. Of course. Well, it starts with a concert on the afternoon of the 17th. Oh, I heard about that. The orchestra and singers come from the USA, don't they? They're from Canada. They're very popular over there. They're going to perform a number of well-known pieces that will appeal to children as well as adults. That sounds good. My whole family are interested in music. The next day, the 18th, there's a performance by a ballet company called Eustatis. Sorry? The name is spelt Eustatis. They appeared in last year's festival and went down very well. Again, their programme is designed for all ages. Good. I expect we'll go to that. I hope there's going to be a play during the festival. A comedy, ideally. You're in luck. On the 19th and 20th, a local amateur group are performing one written by a member of the group. It's called Jemima. That'll be on in the town hall. They've already performed it 2 or 3 times. I haven't seen it myself, but the review in the local paper was very good. And is it suitable for children? Yes. In fact, it's aimed more at children than at adults. So both performances are in the afternoon. And what about dance? Will there be any performances? Yes, also on the 20th, but in the evening. A professional company is putting on a show of modern pieces with electronic music by young composers. Uh-huh. The show is about how people communicate, or fail to communicate with each other, so it's got the rather strange name, Chat. I suppose that's because that's something we do both face-to-face and online. That's right. Before you hear the rest of the conversation,
You have some time to look at questions 5 to 10. Now listen and answer questions 5 to 10. Now, there are also some workshops and other activities. They'll all take place at least once every day, so everyone who wants to take part will have a chance. Good. We're particularly interested in cookery. You don't happen to have a cookery workshop, do you? We certainly do. It's going to focus on how to make food part of a healthy lifestyle. And it'll show that even sweet things like cakes can contain much less sugar than they usually do. That might be worth going to. We're trying to encourage our children to cook. Another workshop is just for children, and that's on creating posters to reflect the history of the town. The aim is to make children aware of how both the town and people's lives have changed over the centuries. The results will be exhibited in the community centre. Then, the other workshop is in toy making, and that's for adults only. Oh, why's that? Because it involves carpentry. Participants will be making toys out of wood, so there'll be a lot of sharp chisels and other tools around. It makes sense to keep children away from it. Exactly. Now, let me tell you about some of the outdoor activities. There'll be supervised wild swimming. Wild swimming? What's that? It just means swimming in natural waters, rather than a swimming pool. Oh, okay. In a lake, for instance. Yes, there's a beautiful one just outside the town, and that'll be the venue for the swimming. There'll be lifeguards on duty, so it's suitable for all ages. And finally, there'll be a walk in some nearby woods every day. The leader is an expert on insects. He'll show some that live in the woods and how important they are for the environment. So there are going to be all sorts of different things to do during the festival. There certainly are. If you'd like to read about how the preparations for the festival are going, the festival organizer is keeping a blog. Just search online for the festival website, and you'll find it. Well, thank you very much for all the information. You're welcome. Goodbye. Goodbye. ओके सो देखो 17th ऑफ कोर्स कॉन्सर्ट वो बोलती है कि वो बेसिकली कहाँ से हैं यूएसए से बट वो बोलता है नहीं वो परफॉर्मर्स कनाडा से हैं 18th को एक बैले शो है कंपनी का नाम था EUSTATIS लास्ट में 19th एंड 20th को आफ्टरनून को एक प्ले होगा जिनका बहुत अच्छा रिव्यू था तो हैज हैड अ गुड रिव्यू 20th को वो बोलती है एक डांस शो तो वो बोलता हाँ है शो का नाम है चैट शो ठीक है 5th क्वेश्चन का आंसर है कि मेकिंग डैश फूड मेकिंग हेल्दी फूड ठीक है कोकरी बोला था उसने वो नहीं आएगा मेकिंग हेल्दी फूड क्योंकि उसमें वो जो केक बनाएंगे उसमें लेस शुगर डालेंगे चिल्ड्रन के लिए बोलते हैं कि क्या कुछ है एक्टिविटीज वर्कशॉप्स तो वो बोलता है यस दे आर पोस्टर मेकिंग एक्टिविटीज फॉर द चिल्ड्रन राइट आफ्टर दैट इन द 7th क्वेश्चन वो अडल्ट्स के लिए बोलता है कि मेकिंग टॉयज फ्रॉम डैश तो वो बोलती है ऐसा क्यों एडल्ट्स के लिए क्यों क्योंकि वो बोलता है इसमें जो एडल्ट्स हैं वो वुड का यूज करेंगे ठीक है उसके बाद 8th में हमारे पास है कि 8th में वो स्विमिंग करेंगे लेक में 9th में वॉकिंग इन द वुड लेड बाय एन एक्सपर्ट ऑन इंसेक्ट्स इंसेक्ट नहीं इंसेक्ट्स एस आएगा क्यों आएगा ताकि उसने बोला है अगर आप छोड़ दोगे ना आप इंसेक्ट लिखोगे आपका आंसर क्रॉस मार्क हो जाएगा लास्ट में उसने बोला है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए देखना है तो आप फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर के ब्लॉग को देख सकते हो ब्लॉग्स नहीं ब्लॉग को देख सकते हो तो ये इसके आंसर थे स्पेलिंग प्रोनाउंस करने नहीं आ रही EUSTATIS second one is review third one is dance fourth is chat fifth is healthy sixth is posture 7 is wood 8 is lake 9 is insects 10 is blog okay
आई होप आपको समझ आई होगी। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। राधे राधे।